Of course, before we actually begin to answer that particular question, that should we start doing GDs and PIs and WATs and extempore, let us first of all understand, try and understand the overall process itself. So what's the overall process? So if in case I tell you, after your CAT examination, when the results come out in sometime in uh, mid-December, late December, and maybe sometimes in January first week. Officially, they may say January first week sometime, but in the last few years, what we have seen is that results come earlier than that, which means maybe late December sometime, 20th December, maybe 18th December, sometimes, in that time zone. So when the results come earlier than expected, the GDPI also starts earlier than expected, actually. This has been the trend for the last few years. So if you see some colleges like, say, IIM Lucknow, for example, in the last 1 or 2 years, they started giving interview calls sometime in mid-January. SP Jain, if you're aware of, one of the top B schools, they again started giving, profile-based calls, in early, December itself, before even the CAT results are out. They start giving you calls for profile-based interviews and GDs and mock group interviews. So now, see, the idea is when I have to prepare on so many things, as in you need to prepare on, say, written ability test, group discussions, extempore, personal interview, all these aspects one has to prepare after the CAT examination. So normally the advice is and was probably for all our aspirants that please start as early as possible. So once you begin your CAT preparation in, say, January, February, this year, so we ask students to prepare for CAT and also, work on improving your GK, working on your academics revision, maybe, doing some internships, enhancing your resume, everything else. So it has to go parallel, actually, with your preparation. That's what we advise normally. So if somebody was preparing for, say, somebody's preparing for CAT 25, so we would advise that candidate, when you join any, the coaching, you please start your GDPI and written together. That's what the general advice is. That's how it helps. Otherwise, please think on it. You need to go through the GK of last 1 year, 6 months for sure, I tell you. Is it possible to do that in a span of, say, 10, 15 days? It's not possible. So please understand this whole, line of the preparation in GDPI. Say November 30th, the CAT exam, right? December around 20th, the results. Say Jan 15th onwards, some interview process starts. So see, if somebody waits, after the result, you don't have enough time, because they start giving you call in January sometime. Say IIM Lucknow, as I said, and some more colleges. They start giving you, say IIM Rohtak also. So you don't have a lot of time in between here to prepare for the whole lot of GK and revise all your academics. And there's so many other things to do. Plus, is it possible to, enhance your overall communication abilities in a span of 15, 20 days? It's not. Additionally, my dear friends, please understand, after you take the CAT examination, you have some exams in December also. You have SNAP in December. You have ZAT in January here. So please tell me, is it only about the written examination we need to clear? Or is it about the overall process? So be very careful about it. So based on the kind of exams you're taking this year,
Based on the time span you have in between different examination, you need to manage it. You have to manage both the things, right? So that's where it's very crucial to start early. If by now you have not started, I would say even now would be a good time. And why am I saying that? Say, for example, you have been advised to regularly read. This advice we give to people, when people start joining us, we ask them to read novels, magazines. They read it from our library. They can issue books from here, read newspapers and all those reading links from our website and all those stuff. So we ask them to do that. See, reading definitely helps you in VRC, no doubt about it. So one section is taken care of more so when somebody starts reading. Reading also leads to speed enhancement in other sections as well. A fast reader would definitely read even maths questions faster or can understand data faster. So is it only about English when we ask you to read? No, it's not. It's about the overall thing. So please understand this aspect. So reading helps you in GK, in VRC, of course, improving your speed in other areas, plus your general awareness and knowledge. If you are aware of so many aspects of, the recent happenings, please tell me, will you not be able to write a good essay then if they ask you to write something on, say, the trade war going on around the world or the tariff war? You'll be able to write it. Only a well-read person can quickly speak on a topic like this if he or she is given the topic in an extempore. During the interviews, they ask you a lot of questions based on recent happenings, your viewpoints on those, things. It can be wars happening around the world, or how war is necessary for peace for that matter, or any other type of questions. On whose side are you, for example, in the war between Russia and Ukraine, for that matter? Say, it's not just having the information, it's also about having your own viewpoint. So it's not just news, it's also views. I hope if you can get my point, right? So see, this much has to be done. So the earlier, the better, I would say. So devoting half an hour, 40 minutes to reading, even from today, will definitely help you enhance your interview abilities, your extempore, your GDPI, everything. I hope people, you can understand what I'm trying to tell you. Don't just leave it to, the later stages. Or let the call come, call आएगा फिर देखेंगे. अरे भाई, कॉल आएगा अगर जनवरी में और 4 दिन बाद अगर आपका इंटरव्यू है, तो where is the time in to prepare in those 4 days? I tell you, this happened last year also. 15-16 तारीख को somebody got a call in January and the interview was 4-5 days after that. And what do you do in those 5 days? Please tell me. If you get a top IM call or some SPGN or some other calls. A lot of colleges, they give profile-based calls even before the CAT results. So those 40 minutes, I tell you, even from today to every day, I would say, if you start giving time to reading, you do it every day, regularly. It will enhance your overall personality, your knowledge, and of course, all these abilities. I hope you can easily get what I'm trying to tell you guys. VRC is a section in CAT, ZAT, SNAP, and MAT everywhere. तो वहां तो फायदा हो ही रहा है, बट बाकी जगह पर भी देखो फायदा होगा. और याद रखना, आगे जाकर वेटेजेस are really high for all these GDPIs, WAT process. Right? I hope that makes some sense. So let us, get in the depth of all these aspects, as in, how does it help you if in case you start the preparation before the CAT entrance itself? You'll be more confident. I mean, any day, that level of confidence, I mean, anybody's guess. You prepared on something, so you're confident. So that's how it is, right? So starting your preparation early gives you an edge over others. Please understand, it's all about competition. So getting that slight edge, I tell you, every day, that 40-minute edge you get every day.
That really is helpful if you can connect, my dear friends, right? So that 40-minute age I'm talking of, not a huge time. And don't ever think that you'll be wasting those 40 minutes. अरे अभी तो कॉल ही नहीं आई है अभी, why should I prepare for GDPI? No. One has to be hopeful, expect करना है, call आ रहा है, you're getting calls, you'll get calls. Let us plan in that manner. Call तो आना ही है. तो अभी से, I mean, you need to look at the goal post and vision a goal. मैंने goal कर दिया भाई. And now I'll start running towards my goal. तो पहले विजन करना होगा. कॉल आ गई है, आप अभी से वर्क करना शुरू करो, राइट? इससे आपको इनफैक्ट कैट एग्जाम में भी हेल्प मिलेगा, मुझे लगता है, राइट? आई मीन दैट्स हाउ इट इज, राइट? सो सी, it's also about the holistic preparation. GDPI, group discussion, interviews, WATs. I mean, that's written ability test. It involves developing your communication skills, group dynamics, the way you portray yourself. No, that requires practice. That requires time. It cannot happen in 3 days, 4 days. So please understand this. So you're here to completely crack the examination rather than only, crack the entrance exam and then let, the GDPI come and, I'll look at it later on. Nahi chalega ye. I hope the point is taken, guys. So cracking CAT is not enough. Securing an admission call from the top B schools require more than just a good CAT score. So look beyond. Look beyond then, my dear friends, right? So please understand the expectations of a B school. They need a holistic personality with good knowledge, application of that knowledge, decision-making skills, ability to convey whatever he or she has in his or her mind with confidence. Managing abilities. All these things are tested during all these processes, right? So early preparation helps you grasp what B schools look for in candidates, enabling you to tailor your profile and responses accordingly. So you get more time to, fill the gaps if in case you have certain things. People who started earlier than October, I would say, working on their profile building must have, done some internships, maybe some online courses to build the resume, or worked in some NGO for that matter, participated in college events, all those stuff. It's a holistic process, my dear friends. Yeah, even now, it's not late, to be honest. It's not that late. There are weightages, so don't you worry. Still enough time. So reading newspapers, magazines, listening to news channels, of course. Nuksan to nahi. I mean, come on. Benefit to hai, no doubt about it. But of course, you would say, nahi, kya fayda? Nuksan to nahi hoga. I mean, let us put it that way, right? So, देखो, personal growth, GDPI process helps you overall improve your personality. Of course, for this entrance and all, वो तो अलग बात है. But again, it's also for other parts of your life. Exam is one part of my life. I build my personality not just for the exam, is it? Batao. I mean, it's for everything else. I meet people, you go for meetings, you meet strangers, new people. You need to start a conversation. इंटरव्यू में होता क्या भाई, 3 स्ट्रेंजर्स हैं, 2 स्ट्रेंजर्स हैं और मुझको स्टार्ट करनी कॉन्वर्सेशन, यही है ना? तो फिर फाइन, दैट मेक्स सम सेंस. ठीक है, तो कितना देखो डिफरेंट एरियाज में इट कैन हेल्प यू. इट्स नॉट जस्ट द एंट्रेंस आई एम लिमिटिंग माई सेल्फ टू. आई मीन, people who are listening, they can definitely connect, right? I'm sure about that. Okay, I'll just pick 1 or 2 questions here. Improve comprehension while reading editorial section and finance articles of the Hindu. See, somebody's asking how to improve the comprehension ability. See, comprehension is about interpreting what author is intending to tell you. So when you read whatever articles, you read newspapers, so don't just try to only read the written words. Try to critically read it. Think on why the author is giving this example. Question the author while reading critically. Oh, why this point of view by this author? Why author is, giving an opinion of somebody called Karl Marx over here, and that too about economics.
And when Karl Marx says that history is nothing but economics in action, so why is this person criticizing Karl Marx? You know, or maybe telling about Marx that how he was more or less against capitalism when he attributes everything to money. Whatever happened in history is all about money, if in case. So see, know whatever you're reading, first of all, know the words present over there, try to interpret the statements, get the holistic idea of every paragraph. It's not about every line, it's more about the paragraph. If I have 3 points, probably I'll divide it into 3 paragraphs with an intro and conclusion. So your job is to get those ideas from those paragraphs, my dear friend. That'll make you fast also as a reader. So as a CAT aspirant, you should try to get those 1 or 2 ideas present in all the paragraphs, then focus on the question and try to get to the best option. ये तरीका होना चाहिए, if I was able to answer your question, my dear friend. Okay, moving on. So again, we were again there that benefits of preparing early. People have question. कैट के बाद देखेंगे, अरे कैट के बाद तो फिर 6 तारीख को और आगे जाके स्नैप आ जाएगा, फिर बोलोगे स्नैप के बाद, फिर स्नैप के बाद जनवरी में, फिर तो जनवरी में जैट आ जाएगा, अभी बोलोगे जैट के बाद फिर तो कॉल आ जाएगा, एंड यू गेट अ कॉल एंड नाउ यू से अभी कैसे करें. I mean, please look at the timeline. I told you about that, my dear friend. Right? So do it from today. That's the best thing I can tell you. I mean, if some of you are late. So if you start from today, or if you've already started from last month or maybe 2-3 months ago, I mean, that's great, I would say. It helps you, improve your interpersonal skills. See, in a GD, it's a complicated situation. I mean, if you can connect, GD is a complicated situation. Just a second. Okay. I hope you're able to see it. Okay, yes, I think yes, I'm on the slide now. Great. Okay, another question I have from Rashika Joshi. Sir, I'm RC while reading it gets difficult to summarize the para. See, Rashika, summarizing the paragraph requires the understanding of, the area which is being discussed over there. Say, what if it is geography? What if it is about art and culture? What if it is about, say, some philosophical thoughts on existentialism versus nihilism, for example? See, why do we understand less? Think on it. I mean, as per your question, you say it's difficult to summarize. See, why it is difficult to summarize? Because maybe the area being discussed is not my comfort zone. Imagine somebody is talking on something in which you are very interested. It can be sports or it can be anything. Then you see the kind of connect. You can easily read and understand everything. So that's the priority, I tell you. Another reason can be the kind of jargon, the words and phrases being used over there. Maybe you may not be clear on that. So please pick those, keep reading about it. Third reason can be dense passages, lengthy sentences, a lot of punctuations. See, somebody writes something and put 3 commas. The people of North America, if you believe them, so to say, are. So whatever happened in between, they were extra insertions. My sentence started here from the beginning, and actually it should go like this here, if you can see the screen. So whatever was written in between those parenthetical, those commas, they were additional information. Sometimes it diverts you. मतलब ऑथर क्या करता है, थोड़ा सीधा बोला, फिर थोड़ा ऊपर कुछ बोलेगा, फिर और ऊपर इधर, फिर और कुछ उसके बारे में, फिर नीचे आ जाएगा, एंड देन द स्ट्रेट लाइन.
My job is to omit those extra insertions and follow the straight path here. यार ये तो एक्स्ट्रा बातें हैं, मेन बात तो वहां लिखा, तो ऐसा कुछ, राइट? So that really helps actually. So one has to, look at the comfort zone one. Second, all the technical words, jargon present over there. Third, punctuation. Be careful about all the punctuation mark and all. Fourth, do idea reading. आपको एक दो आइडियाज हर पैरा में होता है, आप उस आइडिया पे फोकस करो. Maybe write some 1 or 2 words for every paragraph. I tell you, तुम्हें comprehension में दिक्कत नहीं आएगी. So follow these 3-4 things. It'll really help. Right? You're right. See, if you don't understand the paragraph, so it becomes difficult. I mean, उस केस में आपको थोड़ा 40-50 minutes की रीडिंग करनी पड़ेगी based on your aimcat performance. Oh, these two kind of passage I'm unable to handle. Whenever they talk of justice and political viewpoints, I'm startled and confused. So devote 2 days on those technical words. Read more articles based on that. Third day, you are better than whatever you were 2 days ago. 2 day ka focus karo. 2 days ka focus. Based on your aimcat passages. Don't read anything general now. It's too late. You should read things based on the passages from your aimcats, MCATs. वैसी ही रीडिंग करो, क्योंकि बहुत रिसर्च्ड है ये हमारे पेपर्स, और based on whatever is the trend we give you something and whatever is expected. So please follow reading from the aimcats. That'll really help. I hope I've answered your question. Right? Great. Let us move on. Okay, so it allows you to refine your personal branding and self-presentation. If you practice speaking, if you practice listening, if you practice writing for a month or 2, then only you'll be able to perform better in the actual process. Right? So I hope you understood the importance of starting early, people. So I discussed about why cracking CAT is not enough and you have to go for further preparation as well. But then why wait when you have other exams in between? So do it from now. It helps you overall improve yourself as well. So we discussed about how it helps you enhance your speed. Reading can help you enhance your VRC scores, definitely, directly. And indirectly, it helps you in quant and LRDI section as well in terms of reading it faster. You can understand faster, whatever section, right? Everything is in English. By English में ही तो है सारा पेपर. Maths, DILR भी तो English में ही है. Everything is in English. So that becomes my core area. I mean, it helps me in GWPI extempore. ये नहीं कर रहे तो फिर क्या फायदा, बताओ, खुद सोचो. ठीक. और ये टाइमलाइन जो मैंने बताया, ये टाइमलाइन को ध्यान में रख के आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर कन्विंस कि नहीं अभी से थोड़ा थोड़ा रीडिंग करेंगे, GWPI थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करेंगे, इट कैन रियली हेल्प यू. Sometimes pick a topic and start speaking also. Let's see how many sentences can you speak. Give yourself 30 minutes. Oh, sorry, 30 seconds. Speak for 2 minutes. Extempore, right? Okay, so that was the first part. Now, the second part, I'm coming to the second part. And I'll pick some questions as well. The second part here, my dear friends, is about the process itself. I mean, why am I asking you? Why time is asking you कि अभी से तैयारी करना शुरू करो? तो थोड़ा पता तो GWPI में होता क्या है, तो थोड़ा थोड़ा वो मैं डिस्कस करूंगा. And I'll handle your questions as well. Okay, let me see some questions here. If the para is lengthy, at a point my mind gets tired and I couldn't interpret the questions and answer it. See, as I told you, whether it's lengthy para or short paragraph, please try to jot down 2-3 words for every paragraph. And don't spend a lot of time reading every line, every word. See, I have a question to answer. Maybe based on that paragraph. Go to the question, see if it is there from that paragraph. You may always come back. That option is there. So I need my 3 marks. I'll get that only when I answer the question correctly. I'll not get 3 marks for reading the passage. Only. पढ़े जा रहा हूँ, बिल्कुल. अरे भाई, मुझे नंबर आंसर करने का मिल रहा है, सिर्फ पढ़ने का नंबर तो नहीं है ना. प्लीज इस बात को समझते हैं ना.
मेरे लिए सबसे जरूरी क्वेश्चन है, उसको आंसर करना है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ठीक है, तो फोकस क्वेश्चन पे डालो, रीड करो, गो बैक, एलिमिनेट ऑप्शंस, मार्क योर आंसर। थोड़ी क्रिटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस करो ऋषिका, प्लीज प्रैक्टिस सम क्रिटिकल रीजनिंग। सीआर प्रैक्टिस करोगे तो आई थिंक तुम्हारा वो क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात बढ़ेगी, तो तुम्हें पारा की इंटरप्रिटेशन भी अच्छी हो जाएगी तुम्हारी। आई थिंक दैट रियली है। रीड फ्रॉम द टेस्ट पेपर्स, वट एवर टॉपिक्स यू गेट इन द टेस्ट। मान लो कोई नैनो टेक पे टॉपिक आ गया और आपको पता नहीं उसके बारे में, आज एमकैट मान लो आ गया, तो आप थोड़ा उसको पढ़ो ना, उससे रिलेटेड चीजों को पढ़ो। कभी कोई रोमन एम्पायर के बारे में आ गया तो रीड अबाउट रोमन एम्पायर, रीड अबाउट मायन कल्चर, रीड अबाउट अदर कल्चर्स ऑल्सो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, पढ़ो थोड़ा ओवरऑल उससे रिलेटेड एरियाज पर, तभी फायदा। और मैं स्पेसिफिक रीडिंग बोल रहा हूँ, जनरल रीडिंग नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ टेस्ट बेस्ड रीडिंग करेंगे हम, इफ दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। चलो ग्रेट। सो मूविंग द सेकंड पार्ट नाउ, माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखो, जो मैं अभी तक इतनी देर से बता रहा हूँ कि क्यों टाइम कम पड़ जाएगा, क्योंकि पता है आजकल इंटरव्यूज में बहुत सारा एकेडमिक्स पूछते हैं। अभी रिसेंटली आई रिमेंबर देयर वाज अ स्टूडेंट लास्ट ईयर, शी गॉट अ कॉल फ्रॉम आई एम लखनऊ, और ड्यूरिंग द इंटरव्यू इंटरव्यूअर ने बोला मार्कशीट दिखाओ। शी गिव द मार्कशीट, मार्कशीट दिया, एंड शी वाज एन इंजीनियर, इतने सारे सब्जेक्ट। द इंटरव्यूअर स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। ही डिड नॉट इवन आस्क हर दैट अरे तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, पूछने लगे कहीं से जिसमें कम नंबर थे, पूछे क्यों कम नंबर था, तो बताया उसने तो, एंड दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें कम नंबर आया था। सी, so they expect you to revise your favorite, of course. I mean, maybe they expect you to also go through your weak areas जिसमें कम नंबर आए। अरे नंबर कम आया है, नॉलेज तो कम नहीं है ना, ये बताओ ना उनको कि सर मेरे मार्क्स कम है बट मैंने पढ़ा है, आई नो उस दिन थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा। यू गेट इट राइट। तो अकार्ड्स रिवाइज करना बहुत क्रूशियल है। बोलो 3 दिन में 4 दिन में अगर कॉल आने के बाद आपको 4 दिन टाइम मिलेगा, आप पूरा अकार्ड्स रिवाइज कर पाओगे? थिंक ऑन। जीके के आप 6 महीने का रिवाइज कर पाओगे? पॉसिबल नहीं। लेट्स बी प्रैक्टिकल गाइस। तो देखो, वी गिव यू मैगजीन्स एवरी मंथ, तो 2-3 महीने का मैगजीन थोड़ा देखना शुरू करो ना, पिछले 3 महीने। हाउ मच टाइम विल इट, 20 मिनट्स, 15 मिनट्स डेली, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं। वी कवर ऑल द इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ एवरी मंथ इन दैट पर्टिकुलर मैगजीन, सो प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट गाइस, राइट। अब देखो, कुछ आईएम्स, जैसे आईएम रोहतक है, मिड जनवरी के आसपास कॉल कर देता है, जैट खत्म होगा, रिजल्ट तो कैट का उसी से पहले आ चुका है, अभी कॉल आ जाएगी जाओ। और एक्सटेम्परी भी होता है वहां पर, यू हैव इंटरव्यूज, राइट। So, see, GDs and extempore, we don't see a lot of difference. आपको GD में you have to sit down together and people talk on a topic wherein you don't know who will start when. कोई कभी भी शुरू हो जाता, कब तुम्हें कोई बोलने ना दे, तुम कब किसी को बोलने ना दो, all those stuff. Extempore, they give you a topic and they ask you to start. 30-40 seconds they give you to think. So, I mean, वो थोड़ा करना पड़ेगा ना। भाई बैठो मिरर के सामने, 2 टॉपिक लो, देखो क्या एबिलिटी है तुम्हारी, आज बैठो, चलो ऑल ऑफ बैठो आज, टेक अ टॉपिक or two, give yourself 1 minute, start talking. Let's see ना how it works. अरे थोड़ा एक वार्म अप तो होगा, राइट। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं। एक्सपेक्टिंग कॉल्स, तो द मेन थिंग वाज दैट यू गाइस आर एक्सपेक्टिंग कॉल्स, कॉल्स आएगी। मैं गोल देख रहा हूँ, गोल हो गया, कॉल आ रहा है, तो आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन, राइट। इवन लॉट ऑफ अदर आईएम्स, आई टोल्ड यू अबाउट लखनऊ। देखो, विच आईएम विल डू व्हाट दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर वी डोंट नो, बट ट्रेंड है कि बहुत बार आई एम लखनऊ या और एक आधा आईएम है वो पहले बुला लेते। और प्लस कुछ, इफ यू आर अवेयर ऑफ प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स, ये लोग तो पहले ही बुलाते ही, बिकॉज इनका तो कैट रिजल्ट से पहले ही आपको कॉल आ जाती है। इंटरव्यू भी एसपी जैन वाले बोलेंगे जैन में दे दो इंटरव्यू, 2 ऑप्शन देंगे आपको, एक बार जैन में एक बार फेब में, दे गिव यू ऑप्शंस, व्हेन डू यू वांट टू कम फॉर इंटरव्यू। एंड सम पीपल दे पिक जनवरी बिकॉज दे नो कि कंपटीशन कम है, इस बार अच्छा परफॉर्म करेंगे, चांसेस ज्यादा है मेरे होने का। ग्रेट लेक्स भी प्रोफाइल बेस करता है, गोवा इंस्टीट्यूट करता है, और भी 2-4 है, राइट। तो उन चीजों को ध्यान में रखो आप, और आपको लगेगा हाँ, इट्स रियली
हेल्पिंग यू रीडिंग, मे बी एक्सटेम्परी कभी बैठे बैठे कर लिया, कभी मैगजीन पढ़ ली, वट एवर मैगजीन वी गेव यू, इट विल रियली हेल्प यू. सो सी, एज अ प्रोसेस, एज आई टोल्ड यू, प्रोसेस इज यही. बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे, इनफैक्ट ऑल, ऑलमोस्ट ऑल द कॉलेजेस, दे आस्क यू टू राइट ऑन अ टॉपिक. सो इफ दे आस्क यू टू राइट ऑन अ टॉपिक, यू शुड नो अबाउट द टॉपिक, अदरवाइज व्हाट डू आई राइट. तो जीडी में तो ये है कि कोई टॉपिक दे दिया, कुछ जिंगोइज्म एंड ग्लोबलाइजेशन डज नॉट गो हैंड इन हैंड. तो चलो नहीं पता मुझको जिंगोइज्म, आई मे बी क्वाइट फॉर सम टाइम. कोई तो बोलेगा कि जिंगोइज्म क्या होता है. तो वहां पर ये तो फायदा है कि चलो मैं आराम से बैठा रहूंगा, थोड़ी देर कोई तो बोलेगा. एंड वंस एंड ऑल, जिंगोइज्म मतलब होता है एक्सेसिव पेट्रियोटिज्म, जो आजकल चल रहा है पूरी दुनिया में. एक्सेसिव पेट्रियोटिज्म, ऑफ कोर्स दैट इज हैम्परिंग ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन इज फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, सर्विसेज, आइडियाज एंड ऑल. वो नहीं हो पा रहा, वो रोका जा रहा है, हर्डल लग रहे हैं. तो वही बात हो जाती है. तो जीडी में तो फायदा है कि कोई तो बोल देगा. आई कैन बी क्वाइट फॉर 2 minutes एंड देन स्टार्ट इन द फोर्थ मिनट, नॉट अ प्रॉब्लम. बट ऐसे राइटिंग प्लीज टेल. अगर नहीं पता टॉपिक के बारे में मुझे, तो आई मीन वहां पर तो कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं होगा, खुद ही लिखना है, राइट. सो थोड़ा पढ़ना देखो इसलिए जरूरी है, राइट. ओके. बाकी जीडीज देखो, मोस्टली एक्सेलराई, एमडीआईज वगैरह में, आईएफटी वगैरह में हो रहा है. सम आईएम्स ऑन एंड ऑफ दे कंडक्ट. जैसे आईएम शिलोंग ने कराया था कुछ साल पहले जीडी, पहले आईएम कोईकोड में जीडी होता था. तो ऐसे करके जीडीज कराते हैं. बहुत बार जीडीज मतलब केस डिस्कशन भी बोल सकते हो, केसेस, दे गिव यू सिचुएशंस. एक तरह से सिचुएशन एनालिसिस इज व्हाट दे वांट यू टू डू गाइस, राइट. सो दैट्स द प्रोसेस. इंटरव्यूज देखो हर जगह है. एंड चेक द क्राइटेरिया, चेक द कंपोनेंट्स, यू विल बी सरप्राइज्ड. बहुत केस में इंटरव्यू का वेटेज इज 50%. बोलो, WAT वुड बी 10%, 60% तो यही हो गया. यू गेट माई पॉइंट. ठीक है. सो एवरी ईयर, based on their notification, they'll tell you that what kind of process they'll adopt this time, and you'll have to go. Okay, I have a question here. Let me pick. Nathan asks, is it okay to join local tier 4 college or drop? See, Nathan, it's all about your aspirations. Where do you wish to settle? That's the point. So, I mean, one should not settle for less than one deserves. One should not settle for less than one deserves. That's what I would say, Nathan. So I'll aim high. I may miss. People will pardon me. But again, aiming low and saying that let me join some local tier or go for CAT. I mean, think on it. I mean, it's worth giving it a try for CAT. Let me take the cat. Let me take the bull by the horn kind of. प्रिपेयर करते हैं ना. कितने भाई 7-8 क्वेश्चन भी सही कर लूं अगर तीनों सेक्शन में, तो भी मेरा 90-95% आ जाएगा. अच्छा कॉलेज मिल सकता. हाँ, नहीं आया बाद में देखा जाएगा कि और लोकल कॉलेज ज्वाइन कर सकते कि नहीं. बट ट्राई भी नहीं किया तो आई थिंक दैट्स नॉट, आई मीन द राइट थिंग एज पर मी. सो आई थिंक you should try once at least before going for any college, right, Nathan? I hope I answered your question. Okay. So, and no speculations. Don't think अरे लास्ट ईयर ऐसा था कैट, इस बार ऐसा होगा, पिछली बार ऐसा था, इस बार. See, you can know the trends, you cannot predict. पिछली बार ये टॉपिक दिया, इस बार भी ये टॉपिक देंगे. I mean, that may not happen. So prepare on everything. Be ready for uncertainties. Right? So new situations आएंगे, आपको ready रहना है. Be careful. So quickly on different processes. Written ability test, it has replaced GDs in most top tier B schools. आजकल WATs ही हो रहा है. IIM अहमदाबाद इसको क्या पता AWT बोलता है, एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट. पहले और कोई GMAT वाले इसको AWA बोलते थे, analytical writing assessment. These days people call it written ability. I mean, there's one of the same thing with some twists. थोड़ा थोड़ा twists है.
Sometimes they give you cases, sometimes they give you topics, sometimes they give you a whole paragraph. But तुमको लिखना है. माई कैट वाले जो है, अगर आपको पता हो माई कैट, ये लोग तो आपको एक पिक्चर, चिड़िया बढ़िया की पिक्चर बना देंगे, 3-4 ऐसी पिक्चर बना देंगे. वैसे मैं तो पिक्चर नहीं बना पा रहा हूँ, बट जो भी 4 फोटो बना देंगे, बोलेंगे भाई इस फोटो को देखकर 250 वर्ड लिखो. क्रिएटिविटी, राइट? सो दीज थिंग्स हैपन. So they evaluate your ability to express in a very lucid, clear manner. How concisely you can express everything. Can you connect the dots? Do you have perspectives? Child labor should be banned. So you may have 3 points in favor of it. I know that. इसको ban कर दो भाई, 3 child labor. But do you have 2 points against this? That no, it should not be banned. Please tell me. Think on it. अरे चाइल्ड लेबर बैन कर देना चाहिए, इसका 3 पॉइंट है मेरे पास. क्यों बैन करना चाहिए? क्योंकि भी छोटे हैं, उनके पास पावर नहीं है. दे शुड लर्न, दे शुड नॉट वर्क, सो मेनी थिंग्स. चिल्ड्रन शुड नॉट वर्क, इज द टाइम टू डेवलप देमसेल्व्स. 50 पॉइंट. बट क्या आपके पास 2 पॉइंट है फेवरिंग कि नहीं, चाइल्ड लेबर शुड बी अलाउड? आई मीन ऑफ कोर्स इन सम केसेस. सो दैट्स वेयर दे चेक यू. तो इंग्लिश तो एक जरिया है, रीडिंग राइटिंग एबिलिटी तो एक जरिया है. एट द एंड ऑफ इट दे आर चेकिंग योर critical thinking, your mindset, right? So it's not about flowery writing here, my dear friends. आपने बढ़िया flowery writing poetic language में लिख रहे हो, वो चीज नहीं देख रहे हैं, right? So they look at your overall, ability to bring forth points, put forth your ideas, connect all the paragraphs. Problem, solution. That's it. Problem, solution. ऐसा. राइट. तो बाकी जीडीज में देखो, बेसिकली इट्स अबाउट योर ग्रुप डायनेमिक्स. 10 लोग बैठे. नाउ हाउ डू यू मैनेज द टीम इन अ विन-विन सिचुएशन? सो मेक इट अ विन-विन सिचुएशन, नॉट अ वन साइडेड मोनोलॉग और समथिंग. मैं बोले जा रहा हूं, सब सुने जा रहे हैं, ऐसा वाला नहीं. टेक एवरीबडी टुगेदर. तो वो आइडियाज आपको बताने हैं जो ग्रुप के लिए हो, और ग्रुप के आइडियाज आप एक्सेप्ट कर रहे हो, थोड़े नेगेट कर रहे हो, थोड़े एक्सेप्ट कर रहे हो. इस तरह से होना चाहिए. Somebody gave a good point and you have to think on it whether it's a valid point. And if you think it's a valid point, add value to that. And then you may have a different point of view. बोलो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. तो ये सब करने में टाइम तो चाहिए कि नहीं, बोलो. थोड़ा प्रिपरेशन चाहिए होता है. तो इसीलिए इन अ वे थोड़ा से अभी से काम करना शुरू करेंगे, इट रियली हेल्प यू. थोड़ा डिबेट शोज वगैरह देखो, थोड़ा रीडिंग करो, थोड़ी कभी प्रैक्टिस करो, इट हेल्प्स यू. ठीक है. So that's about GD. WAT written ability test. Almost GDs 20 से 30 मिनट्स का होता है. सेम टाइम रिटन एबिलिटी टेस्ट भी 20 से 30 मिनट का होता है. मतलब इतनी देर का नॉर्मली बता रहा हूँ. इंटरव्यूज कहीं भी हो सकता है. इंटरव्यू 10 मिनट का भी हो सकता है, इंटरव्यू 1 घंटे का भी हो सकता है. डिपेंड करता है, राइट? सो इंटरव्यूज का टाइम कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, राइट? ना, आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. So interviews के लिए it's not just, oh, I go there, wearing a tie and, well groomed and sit down there, wish them, oh, good morning, sirs, how are you? फाइल वाइल बढ़िया फोल्डर बना के ले गए, सारे सर्टिफिकेट डाल के बैठे वहां. See, this is just 5% of the interview. The way you enter, the way you sit down, 5%. उसके बाद जो होता है, that is what interviews are all about in B schools. So, I mean, they can ask from your academics, from the general awareness, from your hobbies. They can pick any point from your SOP or your resume somewhere, and they can start asking about that. They'll go in the depth of it. Question पे answer होगा. From that answer, they create a question, throw it back to you. You answer that. From your answer, a question is created, thrown back to you. ऐसा होता. So बहुत बार it's not the answer, whatever you say. It's more about how do you justify your answer.
आप कुछ भी बोला, एमबीए करना है, हाँ सर एमबीए करना है, मेरा इंटरेस्ट है, जस्टिफाई योर इंटरेस्ट। कुछ करा इससे रिलेटेड कॉलेज में, कोई कोर्स भी किया कभी क्या पहले? नहीं सर अभी इंटरेस्ट आया, बहुत अच्छा, अभी इंटरेस्ट आया, सो व्हाट, कैसे? वो सर टीवी पर ऐड देखा था तो उसमें थोड़ा कनेक्ट करा कि वो आई विल बी इन मार्केटिंग एंड, चलो ठीक है, कुछ तो ट्रिगर है। So see, nothing is right, nothing is wrong here. It's more about how do you justify it. I hope if it makes sense. ठीक है, तो वही टाइम चाहिए, बात वही घूम के आ रही है कि थोड़ा प्रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए। Even a simple question on tell me about yourself would need some time to think and answer. Otherwise, it will become a monotonous 10 line, kind of uh, bland or a flat kind of introduction, which may not add value to the whole interview process. तो थोड़ा तो क्रिएटिविटी चाहिए ना, थोड़ा तो कुछ ना कुछ ट्वीक करना पड़ेगा मुझे, right? तो टाइम चाहिए उसका, राइट? सो थोड़ा बहुत अभी से शुरू करो, और बाकी बाद में करेंगे, दिसंबर के बाद तो और भी होता है, दैट्स फाइन, बट थोड़ा सा अभी से ही करना शुरू करते हैं। सो इट्स नॉट डिस्क्वालिफिकेशन टूल, यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको डिस्क्वालीफाई करेंगे, डोंट यू वरी अबाउट दैट। पॉइंट्स देंगे आपको, मार्क्स देंगे। मान लो जीडी का कुछ 10 पॉइंट है, डब्ल्यूएटी का मान लो 10 पॉइंट है, पीआई का मान लो 40 पॉइंट है, तो ऐसे करके पॉइंट्स होता है। सो बाद में एडअप करके दे प्रिपेयर द मेरिट लिस्ट। फाइन, तो इस तरह से होता है। कभी थोड़ा कोई चीज खराब भी होगी तो दिस नथिंग मच टू वरी, ऐसे थोड़ा खराब हो गया, डोंट वरी, पीआई अच्छा होगा, या extempore if there is extempore, fms has extempore, you know I am rohtak, a lot of times they ask topics during interviews, imt sometimes they ask, lbs, one of them, they incorporate this extempore thing these days. Extempore is part of interview, let us understand, topic deke on the spot thinking, that's what they check. अच्छा, यहाँ पर वी हेल्प यू विद ऑल दीज प्रिपरेशंस अर्ली ऑन, अभी पहले भी और अभी भी वी हेल्प यू, you know through those mock interviews. We have a panel will help you understand yourself, how to frame your answers, what to say, how to speak, everything. तो प्रैक्टिस कराते हैं हम, बहुत बार जीडी कॉम्पिटिशन्स भी कराते हैं हम यहाँ पर पहले से, शुरू से, राइट? सो सम डूज एंड डोंट्स विल टेल यू अबाउट द सर्टिफिकेट्स, अबाउट अदर थिंग्स। और पता है रिज्यूमे एक तो बनाना ही होगा, बिकॉज देखो पता है फायदा क्या है, दिस हेल्प्स यू आंसर द क्वेश्चन ऑन योर इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, रिज्यूमे में लिख दिया तो अपने आप पता चल गया, आप बता सकते हो। दिस हेल्प्स यू आंसर दैट intro part, no doubt about it. This helps you answer a lot of SOP based questions. SOP based questions as in, say for example, SPJAN form, if some of you have filled it, there's certain questions there. Tell us about some personal responsibilities which you took care of. Some professional responsibilities. Write about your interest in marketing. If you're interested in marketing, why are you interested in marketing? So these kind of SOP based questions are there in the form. Now, in forms like SPJN, FMS, etc. And later on, जब आपको कॉल आएगी तो ऐसे क्वेश्चंस फिर से वापस आएंगे, बाद में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट? तो एक तरह से रिज्यूमे में तैयार होने से ना बहुत सारी चीज अपने आप आंसर हो जाता है, तो वन हैज टू बी रेडी विद दैट आल्सो। ये थोड़ा बहुत आई एम श्योर कॉलेज में आजकल लोग बना लेते हैं, सो दैट्स वन थिंग, पीपल आर स्मार्ट। एंड आई सी लॉट ऑफ पीपल कैरिंग दोस विजिटिंग कार्ड आल्सो। स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, कार्ड बना लिया, नाम लिख लिया, कॉलेज का नाम, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स सोसाइटी, नीचे फोन नंबर, email, LinkedIn profile. And they come to us a lot of times for sponsorship and all. So they would give the card. It looks very professional. I mean, students carrying card. I mean, think on it, right? Interesting. I mean, that's what professionalism is all about. भाई नाम बता दिया तो भूल जाएंगे लोग, कार्ड दिया तो भाई कहीं तो कुछ तो फिजिकली दिया ना अपने सामने वाले को, एक इंप्रेशन क्रिएट, ठीक है? So that's how it is. So I mean we help you with all these interviews and mocks and all these things, right? और रिज्यूमे मैंने बताया कितना क्रूशियल है, इसमें
मेजरली इट्स अबाउट योर अकेड्स, योर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स, थोड़ा वर्क एक्स है वो लिखो. योर एक्स्ट्रा करिकुलर्स आर क्रूशियल दीज डेज. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, योर एक्स्ट्रा करिकुलर्स, है ना. तो what else did you do? They may be interested on that. So you need to tell them, sir, ये सब करा. Right? Let me see if I have any question or something. Somebody has put the resume or something. अच्छा, resume is usually for fresher. See, as I told you, Vipul, just now, the freshers in second year, they carry the visiting card. कि भाई नाम लिखा और कोई सोसाइटी का मेंबर भी हो, ऐसा करके कर रहे हैं लोग. तो फ्रेशर होना एडवांटेज है, मैं तो बोलता हूँ. फ्रेशर्स को मोल्ड कर सकते हैं कैसे. तो बी प्राउड ऑफ बीइंग अ फ्रेशर, राइट. You are somebody who can be molded and made to anything. So be proud of that. Don't feel the pain. अरे नहीं तो मैं तो fresher हूँ. No. I mean, it's a good thing you're a fresher. Fresh चीज खाते हैं हम लोग नहीं, fresh, right? So don't worry about being a fresher. I tell you. ठीक है. तो जो भी academics, extra curriculars, internships, projects, hobbies, interest, ये सब डालो अपने resume में. इंटरेस्टिंग होगा. ठीक है. देखो, फ्रेशर्स को भी प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स आते हैं. We see a lot of students getting profile based calls being a fresher, but उनके acads strong होते हैं, or probably they have some national, international, state level certificates. Versatility जो column है ना, versatility उसके basis पर some people get calls. So yes, people can expect calls. And uh, as a fresher, what should I avoid during the form filling? I mean, during the form filling, I told you it's about three things this time in the form. I checked the form, SPJN का फॉर्म चेक किया मैंने. So there are three things मेजरली जो लिखने वाला है. एक वो पर्सनल प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक है वर्सिटैलिटी, हाउ वर्सिटाइल यू आर, आपने क्या क्या और किया है, एक है एकेडमिक अचीवमेंट्स. सो एकेडमिक अचीवमेंट्स पुट करो, आप वर्सिटैलिटी में एक्स्ट्रा करिकुलर्स वगैरह डालो उसमें, राइट. और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले में पर्सनल और प्रोफेशनल वाला डालो. अवॉइड राइटिंग एनीथिंग वेरी नेगेटिव जिसका आउटकम नेगेटिव है. So avoid writing anything negative, any extreme, no extreme viewpoints anywhere. So avoid doing these three things. I am tag Giridhar. I mean, you are asking this question, which means it means, right? Means a lot. Because even if it is baby IM, I want to do my MBA in an IM. I think, Giridhar, it's fine. And let us not call it a baby IM. 2015 में बना है बेबी, अभी 2025 है, 10 साल हो गया, बच्चा बड़ा हो चुका है, राइट. सो लेट्स नॉट कॉल द बेबी आर्म्स एनीमोर. they've grown up now, my dear fellow member. Please understand this part. और अब आई एम का टैग, एज यू से कि चलो आई एम का टैग काउंट करता है. देखो, आप चेक करो ना their placement records. Even those so-called baby IIMs, they're giving you anything close to 16-17 lakh per annum. Those new IIMs, Ranchi, Rohtak, Trichy and all, they've crossed 20-21 lakhs per annum. Older IIMs, they're close to 30. तो ये चल रहा है. 10 years, 15 years down the line, IIM written in your resume, any IIM. I mean, IIM. Wherever you send your resume, एक बार लोगों की नजर रुकेगी भाई. मतलब, we get a lot of resumes. We see it, of course, IIT, IIM, कुछ NSUT, कुछ SRCC, STIF, ऐसा. See, एक brand image है. So it matters, actually. Definitely, Sri, I would say yes, you're right. You want to do it from any IIM, I'm okay with that. I'm okay with that. Right? If that matters to you. But go there, learn, enhance yourself, be in the top 20%, you get good placements. No problems, no doubts about it. Right? अब तो जीके में अपडेटेड रहना है, टू बी वेरी अपडेटेड. कुछ भी पूछ रहे हैं, कोई एक्ट के बारे में, कोई वॉर के बारे में, कुछ नेबर, इंडिया के नेबर के बारे में, यू हैव टू बी अपडेटेड. चैट जीपीटी, इज इट स्पॉइलिंग द यंग जनरेशन, कुछ भी. तो
आपको अपडेटेड रहना है अबाउट द व्यू पॉइंट्स. डोंट गिव एनी एक्सट्रीम थॉट्स. कोई एक्सट्रीम बातें मत करो. दूसरों की बात भी सुनो. you know, अगर ये टॉपिक कहीं GD में चल रहा हो तो, राइट. अदरवाइज you have to really pick some recent topics and do the in-depth analysis of those topics. You can have your opinion. ऐसा नहीं कि you should be neutral. You can have your opinion, but your opinion should be backed by facts, data. So be careful and don't bring in those extreme elements. That's again important, right? So GK becomes crucial. Read newspapers, read our magazines, listen to TV news channels. It's fun. It's fun, right? We don't count it as your study time. 6 घंटा पढ़ते हो तो अगर आधे घंटे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आप, तो उसको माइनस मत करना 6 घंटे में कि सर 6 घंटे में तो 1 घंटा में न्यूज़पेपर पढ़ता हूं. अरे वो रीडिंग टाइम है, वो स्टडी टाइम नहीं है. वो रीडिंग अलग है. रीडिंग, पीपल एंजॉय रीडिंग. यू गेट टू नो अबाउट थिंग्स. ठीक है, उसको मत काउंट करो इसमें. होता है ना बहुत बार लोग, अरे 5 घंटे पढ़ूंगा, 1 घंटा हो गया, 4 घंटा बचा. सो आई मीन, लेट्स नॉट गो बाय दैट. It's not about the number of hours at the end of it. It's about what you do in those hours. Fine. So see, looking at all these things, I'm sure if I go back to my first slide and tell you कि देखो how important is it to start the preparation of GWPI now, or should I wait? I mean, I don't need to say anything now. मुझे अब बोलने की जरूरत नहीं कि देखो ये करो या कुछ और करो. अब if in case you can understand whatever has been discussed so far, right? So the idea for today's session was to help you understand the overall process and how it may not be a very judicious thing to start your reading and GDPI thing after the results of CAT or something. Do it from now onwards. They'll help you in your VRC section also. It'll enhance yourself. It'll boost you. It'll improve your confidence level and many more things. So probably that was the agenda for today. So thank you so much for joining us. Best of luck. Give your best and get your dream, whatever your dreams are. So go and get your dreams. That's what we would like to wish you from the Time fraternity. So thank you so much for joining us. Stay healthy, stay safe, guys. Happy Diwali to all the viewers and listeners. And I'm here to answer some of your questions, if in case I have one or two more here. Pleasure, Rushika. It's a pleasure. Extracurricular throughout the college extremely good in my opinion. चलो ठीक, अच्छा ओपिनियन है तुम्हारा एक्स्ट्रा अच्छा है. That's really good, विपुल. और लिखा है तुमने अचीवमेंट. अकाड अचीवमेंट नहीं है, कोई बात नहीं. देखो, आपकी एक्स्ट्रा क्लास अच्छी है, अकाड में कोई ज्यादा अचीवमेंट भी नहीं है, तो टॉप 10 में भी हो, अगर आप टॉप 15 में हो, सो पुट समथिंग देयर ना. व्हाई टू कीप इट ब्लैंक. सम ओलंपियाड में कुछ आया हो, कुछ जीके का आजकल वो होता है उसमें कुछ आया हो, कोई MUN वगैरह कर रहा हो कुछ. MUN तो चलो अकेड्स में नहीं आएगा. सो एनीथिंग विच पर्टेन्स टू एकेडमिक्स. को करिकुलर्स भी चले. साइंस किया है तो कोई साइंस में एक्सपेरिमेंट्स में पार्टिसिपेट करा है या उसमें कुछ अवार्ड मिला है. थिंक ऑफ समथिंग एंड डोंट वरी. दे लुक एट द होलिस्टिक पर्सनैलिटी रादर देन जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. और कैट तो भी होना ही है. कैट का तो वेटेज है ना बहुत. कैट तो होना ही, राइट. सो विश यू लक, विपुल. टेक केयर. Okay, so thank you so much for joining. Bye bye. Take care. This is Amit Poddar signing off. Thank you so much. ओलंपियाड चलेगा. ओलंपियाड चलेगा. That'll be fine. बिल्कुल.